3D model of Animate. it. In fact, this is a Ropex ferry where the vehicles can roll on and roll off, and there are also an arrangement for passengers. Now we will show that what is inside of the smooth skin, that means the structural members. It will start from the bottom and gradually will go to the upward. First, the solid floors. The solid floors is provided in every wave frame and every frame in engine room and pounding region. This is bottom frames. The bottom frame which is provided in every ordinary frames. This blue one is strut. Strut connects the ये inner पिंक bottom वाले ब्रैकेट फ्लो हो रहे हैं, बीच में लगे हुए हैं, ब्रैकेट है, नॉट and सॉलिड. the bracket. Here the red objects are bilge bracket. There is lightning hole in every bilge bracket. There is This is center girder. The center girder, actually bottom girder. Bottom girder consists of two members. The red one is center girder, which is called the backbone of the ship, and the side girders are situated in side of the center girder, which supports longitudinally. This is wave frame, transverse wave frame. The red one is transverse wave frame, which gives the transverse support. This is wave plate, the green marked one, and in every wave plate there is a lightning hole which reduce the weight. This is bulkhead. There is a combination of bulkhead system. There is transverse bulkhead and there is longitudinal bulkhead. The green one is bulkhead stiffeners, which stiffens the bulkhead. This is the blue one is ordinary frame. Ordinary frame is provided in every frame space. This is side stringer, which gives longitudinal support. Here the red one is side stringers. You can see here the objects are side stringers. Red one object. The mouse cursor indicates the objects. As the ship is double hull ship, there is an inner hull and an outer hull. Here we are showing the inner hull. The yellow one is inner hull. Yes, this is inner hull. This is bracket. Brackets transfers the load between two members which are perpendicular to each other. Here the yellow one is brackets. This is deck wave. This is deck wave, which is situated in every wave frame in deck, and this supports transverse in transversely. And there is two deck in our ship. The inner deck, the lower deck is car deck, actually vehicle deck, and the outer deck is main deck or weather deck. This is wave girder, deck girder. The blue one is deck girder, and it supports longitudinally as it is a longitudinal member. Then another blue transverse members are deck girders, which support transversely. Wave beam, deck beam, the transverse deck beam actually in every frame spacing. Now we will go to the superstructure. The superstructure wave frame is here. There is a three layers you can see. The topmost layer is bridge deck or navigation deck. Then the second layer is cabin deck, and the third layer or the lowest layer is passenger deck. This is side girder, which supports longitudinally. This is deck girder. You can see here in the red objects, and the mouse cursor shows the side girder, deck girders. This is ordinary frame, which is situated in every frame spacing. And now we are returning to the skin. We are assembling the skin in the ship. Here the superstructure, bridge deck, inner bottom, outer bottom, deck plating, shell plating. Actually we made it for weight calculation. We draw it in Rhino, and we draw the structural members, and precisely we can calculate the volume, and thus we get the weight of the ship, and this weight helps us to find precisely the LCG and VCG of the ship. That's all. Thank you everyone.
Important is your midship section because from here you can find out strengthening members on the ship, what design will be there for compensating for your various stresses. So midship section is a cross section through the ship midway between forward and aft perpendiculars. There's a drawing showing standard cross sections of the hull near midships and presents the scantlings of principal structure members. Scantlings means the sizes of the various ship construction members. So midship section structural drawing is prepared according to the calculated scantlings. This is followed by locating the neutral axis in the midship section. Now basically, what is the neutral axis? I'll just explain, and then we'll come back to this. Now, a vessel is subjected to hog and sag. Various stresses are there, so it's subjected to hog and sag. So, an imaginary axis is known as neutral axis, where your minimum stresses are there when the hog and sag is there. So, the maximum stress will be at the points where the maximum distance is from the neutral axis. So, if you see the maximum distance is if your shear strake, the deck plating, all that is at maximum distance from the neutral axis. Similarly, your bottom plating, keel plating, they will be subjected to garboard strake and all. They'll be subjected to the maximum stresses due to hog and sag. So hog and sag basically we've already done. You have hogging like this. So your neutral axis, here is your neutral axis. So the minimum stresses will be here. Similarly, when you sag, then the minimum stresses will be in the neutral axis. So two criteria, so followed by locating the neutral axis of midship section and calculating the section modulus. Two criteria should be satisfied. The obtained midship section must be equal to or more than the minimum section modulus value obtained by empirical formula in the rule book. We'll not be doing that. The bending stresses at the deck and the keel are calculated, and it is checked if the stress values are within the factor of safety. Now, if you see, this is a passenger ship. We are not doing passenger ship midship section, but just showing you neutral axis of a passenger ship. So this is a neutral axis where the minimum stresses are there at this axis. Otherwise, if you go more distance above it or below this, the stresses are going to increase. So this is the neutral axis, and the bending stress graph is drawn with the neutral axis with the reference, and the topmost and lowermost end of the graph will denote the stress values the deck and keel. So for the general cargo midship section, we prefer this diagram rather than the other diagrams. This diagram is preferred. इसको जरा enlarge कर लें. So if you see, this is the midship section of a single hull. This is general cargo, single hull, not double hull. So this is a single hull will be compositely framed, double hull will be longitudinally. And compositely framed, there are no longitudinals on the side, but the longitudinals are under deck and in the DB. While in longitudinally framed, you have longitudinals on the side, longitudinals under deck, longitudinal in the DB. अब इसमें क्या है कि shear strake is straight, not rounded, सीधा है.
अपर डेक हो गया, ट्विन डेक हो गया। नाउ देयर इज अ खासियत इसकी जनरल कार्गो की है कि ट्विन डेक होता है, और कोई जहाज में ट्विन डेक नहीं होता। मल्टीपर्पज शिप में होता है कंटेनर वेसल्स में, लेकिन नॉर्मल कंटेनर वेसल्स में ट्विन डेक नहीं है। मल्टीपर्पज वेसल में ट्विन डेक होगा जो जनरल कार्गो एंड कंटेनर लोड करता है। तो जनरल कार्गो में ट्विन डेक होगा, विच इज द खासियत और सेलियंट फीचर ऑफ जनरल कार्गो वेसल। तो मेन डेक ये आ गया, हैच कोमिंग ये आ गई, एंड दिस इज डेक ट्रांसवर्स, यहाँ ट्रिपिंग ब्रैकेट आ गया, एंड बेसिकली ये वाले सारे लॉन्जिट्यूडनल्स हैं, डेक लॉन्जिट्यूडनल्स हैं, उसके ऊपर आपका ट्रिपिंग ब्रैकेट आ गया। तो ये आपकी डेक स्ट्रिंजर प्लेट आ गई, विच इज ये डेक स्ट्रिंजर प्लेट आएगी, उसके बाद मेन डेक आएगा, और ये बीमनी आ गई। तो बीमनी सपोर्टिंग दिस एंड द फ्रेम। Now the deck transverses are 300 mm deep with 200 mm flange. Flange मतलब यहाँ मोड़ा गया प्लेट। And upper deck longitudinals are 150, 75 and thickness होगी 15 mm की thickness plate होगी deck longitudinals. Then you have twin deck plating and twin deck transverse ही आ गया, and इसकी twin deck plating होगी 9.5 mm, deck transverse है 300 mm deep with 237.5 mm flange, यहाँ मोड़ा गया है। और यहाँ भी आपके ट्विन डेक लॉन्जिट्यूडनल्स आगे, ट्रिपिंग ब्रैकेट आ गया। दिस इज द ट्विन डेक नी। अब दिस इज अ shear strake, this is quite thick, if you see 20 mm thick है, and जितना आपकी स्ट्रिंजर प्लेट थिक है उतनी ही shear strake थिक है। So that is 210 mm, 22 mm. Grade of shear strake is E grade steel. This E grade क्योंकि हाई टेंशन लेता है। Then ये आपका फ्रेम आ गया, this is side frame, 340 mm into 17.25 mm. The side plating or hull plating 16.5 mm. Now on this frame you have cargo battens. Cargo battens basically लकड़ी के होते हैं in cargo vessels so that sweating ना हो। स्वेटिंग इसलिए हो रही है क्योंकि अगर स्टील डायरेक्टली स्टील पे कनेक्ट होगा, आउटसाइड टेम्परेचर इज लो, इनसाइड इज हाई, कार्गो स्वेट विल टेक प्लेस, इट विल डैमेज द कार्गो। उसको अवॉइड करने के लिए लकड़ी के बैटन्स लगाए जाते हैं, विच प्रोवाइड एन इंसुलेटर फंक्शन। तो यहाँ आपके कार्गो बैटन्स हैं, यहाँ भी कार्गो बैटन्स हैं। नीचे आ जाता है ब्रैकेट, टैंक साइड ब्रैकेट, उसके ऊपर बिल सीलिंग है। तो बिल सीलिंग बेसिकली अब्सॉर्बेंट है, tarpaulin material which absorbs the cargo sweat. Then ये आ जाता है डीबी टैंक का फ्लोर। तो सॉलिड प्लेट फ्लोर आ गया जिसमें मैन होल्स और लाइटनिंग होल हैं, साइड में लाइटनिंग होल, बीच में मैन होल्स, एलिप्टिकल हैं। और टैंक टॉप सीलिंग सेंटर एरिया में है, बिलो द स्क्वायर ऑफ हैच टैंक टॉप सीलिंग है, जो भी यही मटेरियल है, बिल्सिंग मटेरियल, टू अब्सॉर्ब द कार्गो स्वेट। और यहाँ आपका बिल्ज हो जाएगा, टैंक बिल्ज, एंड फॉर टेकिंग सक्शन water will be there, sweat will be collected in the bilges in the center line. So these are your inner bottom longitudinals, bottom longitudinals, side girder जो येलो वाला देखा था वो ये है, सेंटर गर्डर ये वाला आ जाएगा। इंस्टेड ऑफ वन यहाँ दो आएंगे और डक कील आ जाएगा। कील प्लेट इसके नीचे है 1800 mm into 21 mm, बॉटम प्लेटिंग 16 mm। तो ये डायग्राम आपको बनाना पड़ेगा कार्गो वेसल या जनरल कार्गो वेसल हेडशिप सेक्शन। 3D व्यू ऑफ जनरल कार्गो वेसल अगर आप देखो, ये पुराना टाइप का है जिसमें डेरिक्स लगे हैं। स्टुल्कन डेरिक है, ये वाला स्टुल्कन डेरिक है, इट कैन कैरी ओवर 100 टन्स। एंड ये डेक्स, ये आपके डेरिक्स लगे हुए हैं,
यूनियन परचेसेस से इसको यूज किया जाता है डिस्चार्जिंग के लिए। योर कंटेनर कम मल्टीपर्पज वेसल है, जनरल कार्गो प्लस कंटेनर्स भी लोड हो जाते हैं ये वाले। So modern dry cargo ship designs maximum hold space. Typical mid-ship size may be having 5 or 6 holes, 3 or 4 forward of the machinery space and superstructure, and 1 or 2 aft. Machinery spaces and superstructure usually located about 3/4 aft. Older designs will have 3 holes forward of the superstructure and 2 aft. Holes after the accommodation and machinery spaces provide trim when partially loaded. प्लस इसमें आपका प्रोपेलर इमर्शन होगा। Deadweight of modern general cargo liners range from 9,000 to 25,000, speed between 70 to 22 knots. Tramping vessels slow होते हैं, which are between 12 to 18 knots. Hull depth is depending on your design draft and statutory freeboard requirement. ये हम बाद में करेंगे. Depth of DB is kept low to maximize cargo space. One or more twin decks are fitted to facilitate flexibility in cargo loading and unloading, cargo segregation, and improving stability. There may be watertight doors on the bulkheads on the twin deck levels. Denser cargoes are loaded in lower holds with high storage factor. Refrigerated spaces may be built into twin decks. For a given trade, hold spaces are usually designed so that the ratio of bale to 10% to 15% more than the overall storage factor of the goods carried to allow for more rapid cargo handling and broken storage. Broken storage हो जाता है because of your dunnage space. Broken storage is the structures there which are reducing your loading capacity. So the space is not available for cargo storage because of physical obstructions or ventilation and excess requirements. Holes are sized and provided with cargo gear to limit the amount of cargo cubic per stevedore gang to about 60,000 cubic feet. Holes in the mid-body. So hatches are surrounded by coamings to reduce the risk of flooding in heavy seas. Covers are usually constructed of steel. Earlier used to have wood. Main deck plating provides hatches. It's not affected, providing longitudinal strength and is sized to carry fairly light local loads. The deck outboard plating and hatches is therefore much heavier and exceeding 5/8 inch in thickness. अब ये composite framing हो जाता है जनरल कार्गो में because साइड में आपका ट्रांसवर्स फ्रेमिंग होता है, डेक के नीचे डीबी में longitudinal framing. If you have direct weldings of frames to shell plating, will give rise to rippling effect. इसलिए यहाँ scalloping होता है. Scalloping मतलब tell you what is scalloping. कई बार आपने देखा होगा कि सपोज ये स्ट्रक्चर ऐसे लगा हुआ है और ये स्ट्रक्चर ऐसे लगा हुआ है, ये स्ट्रक्चर सपोज इधर जॉइंट है और सपोज यहाँ एक स्ट्रक्चर है, तो आपके कई बार कट्स लगे होते हैं. इसमें है कि नहीं मैं देखता हूँ. तो देखता हूँ कैसे उसका. हाँ, एक स्ट्रक्चर यहाँ लगा है, एक स्ट्रक्चर यहाँ लगा है. कई बार आपके यहाँ कट्स लगे होते हैं ये वाले. ये देखा होगा आपने, ऐसे कट्स देखे होंगे ना. इस टाइप के कट्स देखे हुए हैं याज पे, टेक पे देखे होते हैं, हैच कोमिंग पे दिखते हैं. इस टाइप का स्ट्रक्चर कोमिंग, ये कटिंग देखी है, ध्यान नहीं दिया. ऐसे कट होते हैं, इसको कहते हैं स्कैल्पिंग. बेसिकली क्या है, क्योंकि 90 डिग्री जॉइंट हो जाता है तो स्ट्रेसेस डेवलप हो जाएंगे, क्रैक हो जाएगा, तो यहाँ कट दिए जाते हैं. तो कट छोटे छोटे कट्स होते हैं टू, so your stresses are not too much in the corners. इधर में आपका ये हट जाता है. सॉरी, इसको
ऐसा दिया, नॉट ऐसे हट जाता है, ऐसे दिया। तो ये स्कैलप्स बने होते हैं साइड में, सो दैट रिपलिंग इफेक्ट्स ना हो। So these are known as scalping. The direct welding into the frame shell plating may give rise to rippling effect, and therefore it is reduced by scalping the frames. To provide the necessary degree of transfer strength, transfers are fitted on the decks and plate floors, the DB. Now, longitudinal framing is not usual in the size of general cargo vessel, because यहाँ में अगर longitudinal framing होगा तो आपका broken space बढ़ेगा, दूसरा deep transfers fit करना पड़ेगा 3.7 meters apart to restore transfer strength, तो आपका broken storage बढ़ जाएगा, इसलिए साइड में आपके ट्रांसवर्स फ्रेमिंग। कार्गो वेसल्स में सीलिंग्स लगते थे बिल्जेस के ऊपर and under hatches to absorb cargo sweat. Sealing over the bilges can be arranged with portable sections which can be removed. जब टैंक टॉप आपका एक्सटेंड करता है शिप साइड पे, बिल्ज वेल्स आर फिटेड ऑफ नॉट लेस देन 0.17 क्यूबिक मीटर कैपेसिटी। उतनी आपकी बिल्ज वेल की कैपेसिटी है, नॉट लेस देन 0.17 क्यूबिक मीटर्स। अगर सीलिंग नहीं लाई गई हो तो टैंक की प्लेटिंग की थिकनेस 2 mm बढ़ जाएगी। तो मिनिमम थिकनेस ऑफ टैंक टॉप इज लेड डाउन एज पर द रूल्स, सो दैट फोकलिफ्ट ट्रक वहां यूज कर सकते हैं, उतना स्ट्रेंथ ले सकें, उतनी थिकनेस की टैंक टॉप प्लेटिंग होगी। A ceiling is raised in the square of the hatch, that is under the hatch cover. Then it should be not less than 65 mm thick in case of wooden ceiling, and should be directly laid on the inner bottom plating, being embedded in suitable composition, laid on battens so that there is a clear space for drainage of at least 12.5 mm. The cargo battens are fitted in the holes from the upper part of the bilge to the underside of beam knee, and in all cargo spaces in twin deck, ये इंसुलेशन देता है, इसकी थिकनेस होगी 50 mm और दो बैटन के बीच का गैप होगा नॉट लेस देन 230 mm. That was your general cargo vessel. किसी को क्वेश्चन है जनरल कार्गो वेसल के ऊपर? ये क्वेश्चन दिया। फ्रेमिंग इसकी किस टाइप की फ्रेमिंग अभी बताई थी? कंबाइंड सिस्टम ऑफ फ्रेमिंग, कंपोजिट। कंपोजिट कंबाइंड सिस्टम एक ही चीज है, कंपोजिट या कंबाइंड सिस्टम एक ही है। बिल सीलिंग का क्या फायदा है? एब्जॉर्ब करता है सर वो। हाँ, स्वेट को ऑब्जॉर्व करता है। तो व्हाट इज कार्गो बैटन? कार्गो बैटन्स वुडन जो आपने बताया बैटन्स लगे होते हैं। क्या फायदा है क्या उसका? कार्गो स्वेट स्टील को डैमेज ना करे, स्टील टू स्टील कांटेक्ट। तो स्टील डैमेज हो जाएगा। स्वेट को रिमूव कर, स्वेट रिड्यूस करने के लिए भाई, इंसुलेशन है वो, स्टील को डैमेज का बचाने के लिए नहीं है। बेसिकली हाँ, इंसुलेशन है वो। इंसुलेशन क्या मतलब? कार्गो स्वेटिंग होता है। अगर जैसे अंदर का टेम्परेचर हाई है, बाहर का टेम्परेचर कम है, आप जैसे कार चलाते हो तो आपका जो ठंड में क्या होता है, अंदर में गर्मी है, बाहर ठंडा, क्या हो जाएगा? फॉग हो जाएगा, आपको दिखाई नहीं देगा। उसी तरह कार्गो स्वेट इकट्ठा हो जाएगा और वो ड्रॉपलेट्स नीचे जाएंगे और कार्गो को डैमेज कर देंगे। उसको अवॉइड करने के लिए कार्गो बैटन। अब तो क्लियर है फंडा? फंडा क्लियर है? क्लियर है। सेलिएंट फीचर्स क्या क्या है? ट्विन डेक है, कार्गो बैटन है, बिल्ट सीलिंग है, ये सब उसके सेलिएंट फीचर्स है। कंपोजिट फ्रेमिंग है, ठीक है। तो ये सारे इसके सेलिएंट फीचर्स हैं जनरल कार्गो वेसल।